Hello and welcome everyone to my YouTube channel Simple Science. Today I'm going to start a new lecture series on time series data analysis and forecasting. I'm very excited to start this because I was thinking about this for a long period of time, and reason behind choosing the time series data analysis and forecasting is टाइम सीरीज डेटा एंड इट्स यूज केसेस आर omni present. आप कहीं भी देखो किसी भी इंडस्ट्री में और टाइम सीरीज डेटा आपको मिल ही जाएगा. और अगर आप स्टूडेंट हैं, मास्टर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग, और या पीएचडी कर रहे हैं, और आप अपनी जो करियर है वो अगर आप एज ए डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर या मशीन लर्निंग एरिया में अगर आप जॉब इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो अगर आपको टाइम सीरीज डेटा का नॉलेज है, टाइम सीरीज एनालिसिस, फोरकास्टिंग, बिल्डिंग मॉडल्स, और ये एक आपने अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो टाइम सीरीज डेटा का जो यूज केसेस है वो आपको हर इंडस्ट्री में मिल जाएगा. आपको हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, आपको फाइनेंस में, आप देखिए बहुत सारे जो फाइनेंस इंडस्ट्रीज है लाइक बजाज फाइनेंस, बहुत सारे बैंक्स, सब जगह डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है. एंड दे ऑल आर बेसिकली आस्किंग टू बिल्ड मॉडल्स दैट आर एनेबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डेटा थ्रू लाइक मैथमेटिकल मॉडलिंग. और जैसे अमेजन हो गया, वो सेल्स डेटा का प्रिडिक्शन करता है. सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हर डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए, कि वो टाइम सीरीज डेटा पे काम करना सीखे. तो उससे क्या है कि जॉब वगैरह में जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी. क्योंकि मशीन लर्निंग में अगर हम कंप्यूटर विजन की तरफ जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ कंपनीज है वो काफ़ी मतलब लिमिटेड है. लेकिन अगर टाइम सीरीज में जाएंगे तो टेलीकॉम सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट साइंस, रिटेल, सेल्स, और भी मैं नाम गिना सकता हूँ जहाँ पर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग से रिलेटेड काम करने वाले लोगों की बहुत जरूरत. इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है. और मेरा मेन एजेंडा ये है कि जो फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं लेटेस्ट में, जिनके पब्लिकेशंस हुए होते हैं, जो मॉडल ग्रो कर रहे होते हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रहे होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन जल्दी नहीं मिलती और कोड भी नहीं मिलता. So I'll be making those explanations and codes of those state of the art and very popular models. So but before that, ये ज़रूरी है कि हम टाइम सीरीज डेटा और फोरकास्टिंग से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लें. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज डेटा एंड टाइम सीरीज डेटा कंपोनेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस नोट डाउन कर दिया है, ताकि अगर कभी इंटरव्यूज में अगर जरूरत पड़े तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकें. तो बेसिकली टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज इन टाइम ऑर्डर सीक्वेंस. सो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जो कि जिसमें जो ब्लैक लाइन है वो हिस्टोरिकल डेटा है, उसको यूज करके मैंने रेड लाइन से इंडिकेट किया है कि वो फ्यूचर वैल्यूज है. एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस जो कि डेटा वैल्यू है. यहाँ पर आप मान सकते हो, लेट्स से दिस इज ए एग्जांपल ऑफ स्टॉक वैल्यूज. सो एक्स कंपनी है, उसकी स्टॉक वैल्यूज एट अ पर्टिकुलर टाइम इतनी थी, एट अ पर्टिकुलर टाइम विंडो, और उसके बाद उसका यूज करके आपके फोरकास्टिंग मॉडल ने ये कुछ प्रिडिक्शंस दिए. सो वो बाद में चेक होगा कि वो कितने efficient है कितने नहीं. So this involves analyzing the patterns, trends and relationship in the past observation to make informed estimates about the future events or values. So next is time series data. Time series data is a sequence of data points collected or recorded at regular time intervals. Irregular nahi, regular time intervals. This type of data is important or can be said as distinguished by its temporal ordering, meaning the order in which the data points occur is important significantly. Time stamp होता है और उससे associated किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू होती है. जैसे अगर वेदर फोरकास्टिंग में जाए तो ह्यूमिडिटी एक वेरिएबल हो गया, तो टाइम स्टैम्प लेट से कि इस दिन को इस टाइम पे कितना टेम्परेचर था या ह्यूमिडिटी कितनी. नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंपोनेंट क्या क्या होता है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में, जो टाइम सीरीज डेटा होता है उसका.
So typically there are three components: trend, seasonality, noise. Let's explore each of these three one by one. So trend refers to the long-term progression or movement in a time series dataset. Basically, trend can be observed that the direction of the data is upward or downward or relatively stable. अगर आपने कभी क्रिकेट देखा है तो अगर हम उसको एज ए टाइम सीरीज डेटा इमेजिन करें तो रन स्कोर बाय ए टीम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो जो टोटल करते जाएंगे वो मोस्टली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। किसी ओवर में कम रन बनेंगे, किसी ओवर में ज्यादा रन बनेंगे। तो वो एक अप एंड डाउन जिगजैग पोजीशन पे हमेशा एक upward direction also. So that trend is that is called as trend. So trend can result from various factors like technological advancements, population growth, changing preferences, or other socio-economic factors. Here I have taken the example of global temperatures. Next is seasonality. So seasonality is the recurring fluctuations or patterns in the time series data that occur at regular interval due to seasonal factors. जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ आइसक्रीम बढ़ जाती है समर के महीनों में, राइट? सो वो एक सीजनैलिटी की तरह से शो करेगा कि हर बार समर्स के टाइम पे सेल जो है वो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती है, और जैसे ही विंटर सीजन आता है तो सेल्स घट जाती है। वैसे ही अगर अदर प्रोडक्ट्स ले लाइक एसी, कूलर, फैन, उनकी सेल्स बढ़ जाती है समर्स में और ठंड में कम हो जाती है। हायर होटल बुकिंग्स ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन्स, मोर ट्रैफिक ऑन वीकडेज, मेनी एग्जांपल्स। सो ये एक रेगुलर इंटरवल पे होने वाली चीजें जो कि फिक्स्ड है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स while building your model. Next component is noise. So noise तो किसी भी डेटा में present होता है by any XYZ reason. So here it is known as the error. Everywhere it is known as the error. Refers to the random variation in a time series that cannot be attributed. ये बहुत important point है। कभी भी किसी भी मशीन लर्निंग टास्क में नॉइज कैन नॉट बी मॉडल। नॉइज आप मॉडल नहीं कर सकते क्योंकि नॉइज के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है रैंडमनेस। सो इट्स ऑल रैंडम, कब आएगा कब नहीं होगा, कब प्रेजेंट होगा कब नहीं होगा, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कुछ पता नहीं। एज एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है स्टॉक मार्केट का। any unexpected spike or drop due to any unforeseen event. So like for example इसराइल हमास का जो वॉर स्टार्ट हो गया उसकी वजह से जो भी चेंजेस आए मार्केट में, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो भी चेंजेस आए मार्केट में, यूएस में किसी की गवर्नमेंट बन गई सडनली, या कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट को हटा के कोई दूसरा प्रेसिडेंट बन गया, दीज थिंग्स आर वेरी रैंडम एंड कैन अकर एनी टाइम। सो नाउ लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइम सीरीज डेटा थ्रू कोड। यहाँ पर मैंने एक सिंपल कोड बनाया है जहाँ पर मैंने सबसे पहले एक टाइम रेंज बनाया, फिर एक उस टाइम रेंज के इक्वल मैंने एक बेस सीरीज बनाई, देन आई हैव मेड ए ट्रेंड, देन सीजनैलिटी एंड देन नॉइज, एंड फिर मैंने एक कंबाइंड सीरीज बनाई एंड आई हैव शोन द प्लॉट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच लाइन ऑफ दिस कोड। सबसे पहली लाइन है pd डॉट डेट अंडरस्कोर रेंज। सो हियर व्हाट आई एम डूइंग इज I'm creating a sequence of dates which is starting from 1st January 2024, and it is creating 365 days of data, that is periods equal to 365. And then I have set the frequency as D. D stand for daily. It means each step in this sequence is 1 day apart. इसका एक मतलब और भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि 1 1 2024 के बाद नेक्स्ट जो टाइम स्टैम्प आएगा वो होगा 21 2024, दैट इज 2 जनवरी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम मिनट पे भी सेट कर सकते हैं, आवर पे भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आई हैव क्रिएटेड द डेटा फ्रेम ऑफ सीरीज पीडी। पांडास से मैंने एक सीरीज को बनाया है जहाँ पर मैंने लेंथ ऑफ टाइम के इक्वल एक एरे बनाई। बेसिकली np.arrange will be creating a number from 0 up to the number of length of time, that is 365. Next is a linearly increasing values over time, that is trend। मैंने एक ट्रेंड क्रिएट किया, डेटा को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली बाय मल्टीप्लाइंग ईच नंबर इन द डेटा सीरीज बाय 0.1, द फर्स्ट नंबर इज 0, तो 0 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, एंड द नेक्स्ट इज 0.1, then 0.2 and up to
36.4. So this creates a slow and steady increase over time. मैंने increase in incremental trend लिया. You can choose you on your own. Next is seasonality. This is very important to understand. So यहाँ पर पहला जो मतलब जो अगर सीजनलिटी का पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो 10 प्लस एन पी डॉट साइन ब्रैकेट में एन पी डॉट लिन स्पेस 0,3 इंटू पाई कॉमा लेंथ ऑफ टाइम इंटू 10. सो लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन. सो जो पहला लाइन है वो है, मैं लूंगा वो एनपी डॉट लिन स्पेस, इसको एक्सप्लेन करूंगा. सो दिस पार्ट इज एक्चुअली जनरेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवनली स्पेस नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3 इंटू पाई. 3 का पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.42 अराउंड, राइट. सो एंड जो इसमें नंबर जनरेट होगा कितने, लेंथ ऑफ टाइम के इक्वल. एंड एनपी डॉट साइन इज एक्चुअली साइन वेव क्रिएट करने के लिए, और 3 इंटू नम पाई करने से 3 वेव्स क्रिएट होंगे, राइट. 3 इंटू पाई, सॉरी, नॉट नम पाई, 3 इंटू पाई करने से 3 साइन वेव क्रिएट होंगे. एंड आई हैव मल्टीप्लाइड इट विथ 10 बिकॉज जो साइन वेव जो क्रिएट होगी उसकी वैल्यूज थोड़ी छोटी होती है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से, जस्ट टू लुक इफेक्टिव नंबर्स. And then finally adding to 10, that is shifting all the entries in the sine wave by 10 units. So my motivation was just to make sure that instead of oscillating between -10 and +10, the wave will be oscillating between now 0 to 20. My intention was to shift the values above 0 of the data, right. एंड देन मैंने रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके नॉइस क्रिएट किया. एंड देन आई हैव क्रिएटेड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल these three things, that is the base plus trend plus seasonality plus noise. And these are the plots of the data. This is the base time series. So आप देख सकते हो ये 0 से 365 गया है. देन व्हेन आई मल्टीप्लाइड विद 0.1, सो ये आप देखिए 0 to 36.4. And then seasonality, there are 3 waves, एक ये और एक ये. And then when I combined all these, this is the our time series data. So ये तो हो गया components. रियल टाइम में जब हम बात करते हैं टाइम सीरीज की, और जब हम उस पे उसके यूज केसेस पे काम करते हैं, तो समटाइम्स कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं. लेकिन it is purely dependent on the use case. These are not omnipresent components, right? So these three components are cyclic patterns, irregularity, and exogenous variables. So let's explore all these three one by one. Cyclic patterns are the fluctuations that occur at irregular intervals, often influenced by broader economic conditions. सो बेसिकली अगर हम एग्जांपल ले जीडीपी ग्रोथ रेट का, सो ए साइक्लिक कंपोनेंट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन द डेटा as the economy goes through the periods of expansions and contraction. एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक इकोनॉमिक रिसेशंस आते रहते हैं, बट यू डोंट हैव अ फिक्स शेड्यूल, राइट. बट दे कम. अभी लास्ट ईयर रिसेशन आया था, बहुत सारे लोगों की जॉब गई. उससे पहले 2010 में आया था, उससे पहले 90s में आया था. सो बट फिक्स डेट नहीं होती. देयर इज अ साइकिल, बट यू डोंट हैव अ फिक्स शेड्यूल ऑफ इट. नेक्स्ट इज irregularity. So these are random variations in the data that cannot be explained by the trend, seasonality, or cyclic component. So for example, if a time series that is representing the number of passengers on a bus route, so this is a irregular component, right. कभी नंबर ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, ड्यू टू एनी इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज रूट क्लोजर, और कोई स्पोर्ट इवेंट हो रहा है या हॉलीडे है. सो रश कितना होगा वो एक इरेगुलर इवेंट है. बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉइज एंड इरेगुलरिटी लगता है कि सेम है, बट इट इज नॉट सेम. दे आर डिस्टिंक्ट
components. Their differences are very clear. And what are these differences? Irregularity can be modeled and forecasted as caused by unexpected events, but noise cannot be modeled. This is a very big difference. You can add your irregularity in your model as a feature. Next is exogenous variables. External factors such as weather, in economic indicators, or government policies may impact the time series. For example, if a time series represents the sales of a product, exogenous variables such as changes in consumer sentiment or a new product launch by a competitor could impact the sales of the product. So this is also a very important component, and you should include exogenous variables in your data modeling that will lead to significantly improve your model's performance. So that was all about today's session. Please feel free to ask you any questions related to this session in the comment section. I will be very happy to answer all those. And next session will be on the exploratory data analysis. Thank you.